Hello students, I am Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Geography's first chapter, that is resources. First of all, what do you mean by resources? It means that anything that can be used to satisfy a need is a resource. Now you can see around you that the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources, right? So all the materials available in the environment which satisfy our need is called as resources. Now water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook which we have discussed have something in common, that is they have all been used by you, so they have some utility, and utility means utility or usability. It makes an object or substance a resource. यूटिलिटी मतलब होता है यूजेबिलिटी, जो हम यूज़ करते हैं, हम हर एक रिसोर्स को यूज़ करते हैं, राइट? सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? So things become resource only when they have some value. Its use or utility gives its a value. All resources have some value. अब हर एक जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू कब होती? जब हम उसको यूज़ करते हैं प्रॉपर वे में. एंड वैल्यू मीन्स वर्थ. Some resources have economic value but some do not have. For example, metals have an economic value but a beautiful landscape may not have. It means that metals like iron, steel, when we sell it in the market, they have some value. We can earn money from them. But a beautiful landscape, that is, हम अगर सीनरी देखें तो उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा. So that is not an economic value. But both are important and they satisfy our human needs, right? Some resources can become economically valuable with time. I can give you an example for that. That is, your grandmother's home remedies have no commercial value today. But अगर वो ही home remedies जो grandmother ने दी है, if it is patented, it means that after inventing it, if it is sold in the medical firm tomorrow, then it is possible that they could become economically valuable, right? So some resources can become economically valuable with time only. Next point is, time and technology are two important factors that can change substances into resources, because both are related to the needs of the people, right? People themselves are the most important resource. Without human beings, nothing is possible. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources, because without human beings, आइडियाज़ जो है, नॉलेज जो है, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज इज़ नॉट पॉसिबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, people themselves are the most important resources, and each discovery or invention leads to many other factors. For example, the discovery of fire led to the practice of cooking, right? पहले के ज़माने में ये जो फायर की जो डिस्कवरी हुई है उसके वजह से ही हम कुकिंग कर पा रहे हैं. एंड द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो. व्हील का जो इन्वेंशन हुआ उससे न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब आफ्टर इन्वेंशन ऑफ व्हील वी गॉट द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. Even the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. लेकिन वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. लाइक हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट हम थ्रू वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो फ्लोइंग वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. नेक्स्ट, the types of resources. Now we came to know the meaning of resources, that is anything which helps to satisfy a need is a resource. So there are three types of resources, that is natural, human made and human. In this video we are going to study about natural resources.
Now, what is natural resources? Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो resources हमें nature में से मिलते हैं and we are using it without much modification in it is called natural resources. Example है air, water, soil, minerals etc. This all comes under natural resources. Air जो हमें naturally मिलती है हम उसको purify direct नहीं करते हैं. Air we are directly breathing it. The water we are using it, that is also a natural resource. Now the natural resources are further classified into different types depending upon the level of their development and use, then its origin, stock and distribution. As we all know that natural resources are called free gifts of nature because nature has gifted us these resources and we are using it. So, classification of resources on the basis of development and use. So, according to the classification on the basis of development and use, it is divided into two parts, that is actual resources and potential resources. Actual resources are those resources whose quantity is known to us, that we know that these resources are available in this much quantity, that is known as actual resource. हमें पता है कि ये resource जो है वो इतनी quantity में available है. And on the other side potential resources में those resources whose entire quantity may not be known. हमें पता ही नहीं है कि exactly कितने quantity में ये resource available है. Second point in actual resources is these resources are being used in the present. Actual resources मतलब वो resources जिसको हम presently use कर रहे हैं. And potential resources, they are not being used at present but it can be used in future, right? सो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? जिसकी क्वांटिटी हमें पता है और हम उसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं. बट पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब जिसकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है बट हम उसको प्रेजेंट में यूज़ भी नहीं कर रहे, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ दैट वी कैन यूज़ इट इन फ्यूचर. अब एक्चुअल रिसोर्सेज में हम एग्जाम्पल देखें तो द कोल ऑफ जर्मनी, petroleum in West Asia, these are all examples of actual resources. And in potential resources, uranium in Ladakh. Means we know that uranium is found in Ladakh but we don't know the actual quantity और हम उसको presently use तो नहीं कर रहे but हमने सोचा है कि हम future में उसको use कर सकते हैं, right? So the level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources. So sometimes we think that अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आएगी तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर. Even high speed of winds were a potential resource 200 years ago. Today they are an actual resource. ये बेस्ट एग्जाम्पल है एक कि हाई स्पीड ऑफ विंड्स, जो विंड्स ब्लो होती है वो हमने पास्ट में सोचा था बिफोर 200 ईयर्स अगो कि वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है, हम फ्यूचर में उसका विंड एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकेंगे. बट सो नाउ टुडे दैट विंड एनर्जी वो एक्चुअल रिसोर्स बन गई है बिकॉज विंड फार्म्स हमने जनरेट कर दिया और विंड फार्म्स के वजह से हमें एनर्जी मिल रही है यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड्स. इवन इन Gujarat we can say there are many wind farms. In Rajasthan we can say there are wind farms located and it is located mostly on the coastal areas. Next we will see classification of resources on the basis of origin. That is very easy, that the natural resources on the basis of origin is divided into two parts, that is biotic resources and abiotic resources. Biotic resources means it includes all the living things and abiotic resources means it includes all the non-living things. Biotic resources जिसमें all the living things जो है वो included है, means it has a living nature, example plants and animals. And abiotic resources में it includes non-living things, means it does not have a living sense, example soil, rocks and minerals, that comes under abiotic resources. Next is classification of resources on the basis of renewability. Now
जो क्लासिफिकेशन एंड रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी पे है, तो अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट मीन्स दैट जो रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकेंगे, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद हम फिर से उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। वाई दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? बिकॉज वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी भी वो ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल है सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जो हमें सन के थ्रू मिलती है, इज़ इट पॉसिबल कि सन हमें लाइट देना बंद कर देगा? नो, राइट। सो सोलर एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज में हम उसको कंसीडर करेंगे। इवन विंड एनर्जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि विंड इज़ गोइंग टू स्टॉप ब्लोइंग, राइट। विंड इज़ गोइंग टू ब्लो कंटिन्यूसली, सो विंड एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है, सो दैट कम्स अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, for example petrol. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished, are called non-renewable resources. हम उसमें मिनरल्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जब तक स्टॉक है तब तक हम उसका यूज़ करेंगे, इट मीन्स दैट वी आर हैविंग अ लिमिटेड स्टॉक। जैसे ही स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आफ्टर दैट इट विल टेक thousands of years to be renewed or replenished again, so they are known as non-renewable resources. They are also called as exhaustible resources, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल गिवन इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Then is classification of resources on the basis of distribution. अब on the basis of distribution again resources are classified into two types, that is ubiquitous resources and localized resources. अब ये ubiquitous resources क्या है? तो ubiquitous resources means they are found everywhere on the earth. कहीं भी जाओ आपको ये रिसोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द एयर वी ब्रीथ। एयर तो हर एक जगह पे मिल जाएगी, सो दैट इज़ नोन एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज। एंड लोकलाइज रिसोर्सेज मीन्स दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस। अगर मैं आपको बोलूँ आपके घर के नीचे आपको आयरन मिल जाएगा, आप वहाँ पे डिग आउट करो, तो इज़ इट पॉसिबल कि आपको वहाँ से आयरन मिल जाएगा? नो ना। So localized resources are those which are found only in certain places, हर एक जगह पे नहीं मिलेंगे। So example is copper and iron. So we have seen the classification of resources on the basis of development and use, then on the basis of origin, on the basis of renewability, and on the basis of distribution. So that was all for this. In the next video, we will continue about human-made resources and human resources. If you liked my video, if you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you. We will continue the next part in the next video.